चलो, तो now we are starting with accounting concepts. So first of all, write up generally accepted accounting principle. Generally accepted accounting principles. GAAP. Okay. Have you ever heard about this? Basically, it is a concept developed by ICAI. Okay, so write down. It is the concept, not the concept. Write down. It is a guideline. It is a guideline which have been developed by professional bodies like ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, Institute of like ICAI, Institute of Chartered Accountant of India. Everyone, please mute your mic. Okay. Now write down GAAP, generally accepted accounting principles. GAAP refers to the rules or guidelines. Rules. GAAP is a set of rules or guidelines adopted for recording business transaction. Adopted for recording business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement. Basically, this has been made for the set of rules, guidelines that has to be followed in accounts, so that there is the uniformity in preparing books of accounts, final statements. Okay. If there were no rules or regulations, then anyone can follow any rule. So that was not correct. Okay. Now give the heading accounting concepts. Write down. It refers to basic assumption and rules which helps in recording
business transaction, and preparing accounts. Okay, it also helps in preparing business transactions, recording transactions, and preparing different accounts. So there are certain assumptions that we take in business. Okay, we are going to read about that different assumptions that we follow in the business. So write down the first assumption or concept. Business entity concept. Business entity concept. Write down, it is also known as accounting entity concept, accounting entity concept, or separate entity concept. रिपीट कीजिएगा तो. It is also known as accounting entity concept or separate entity concept. Separate entities, first of all, try to understand, then we will write about this. Separate entity concept means the business and the owner both are different entities. Okay, so whenever we will be preparing book of accounts, we will think about business, not owner. From the point of view of the business, not from the point of view of the owner. Both are different. We cannot say that business and owner are the same. No, they both are different. So write down. Next point. It means that a business unit is considered as separate entity. It means that business unit is considered as distinct entity from its owner. From its owner. In the next point, write down all the transactions of the business, all the transaction of the business are recorded in books of business from the point of view of the business. No personal information of the owner will be written in books of accounts. Okay, only business transactions will be recorded in books of accounts. Is it clear? Everyone, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now write down the second. Going concern concept. Going concern concept. Going concern concept means we will be thinking that business will be going forever. Okay, it will not close down. That is why we prepare closing balance. We make closing balance, opening balances, balance sheet at the end, so that next year the business will continue. We don't think the business will close down. Okay, so that is the going concern concept. Because of going concern concept,
we think that our business will go on. So write down. It means that business will have an indefinite life. Will Have an indefinite life. That is, it will continue its operation. So that is, it will continue its operation for a long time. For a long time. Okay, because we show prepaid expense and outstanding expense of previous year. Why we show all this? Why we think about prepaid expense? Because we think our business will go on. It will not close down. It is because of the concept of going concern. Now write down money measurement concept. Money measurement concept. Write down, it means that only those events which can be expressed or measured in terms of money will be recorded in the books of accounts. Will be recorded in the books of accounts. It is clear. Money measurement, it means those items which can be measured in money, which can be expressed in money, will only be recorded in books of accounts. Okay, write down next point. Non-monetary transactions are not recorded in accounting. Are not recorded in accounting. Okay, all the non-monetary transactions. Non-monetary transaction means those transactions which cannot be measured or expressed in money. That is called non-monetary transaction. Okay. Like for example, if we say health of a manager, will it be recorded? Or delay in supply of raw material, will it be recorded in book of account? No, sir. No, it will not, because it does not have any monetary value. That is why. Okay. Now write down next, fourth concept, accounting period concept. Accounting period
concept. See, accounting period concept is a concept in which it is told that we have to follow 12-month period है ना, for one accounting cycle. So write down, according to this concept, according to this concept, an accounting period is the interval of time at the end of which financial statements are prepared. Financial statements are prepared. In order to show the result of the business. Okay. In next point, write down 12-month periods. 12-month period is normally adopted for this purpose. Okay, we normally follow 12-month period. And in India, what is the accounting period? It starts from 1st of April and ends on 31st of March. Write down next concept, cost concept. Repeat the Cost concept, COST. Write down according to the cost concept. Transactions should be recorded at their cost. Should be recorded at their cost. at beer cost or the cost. Their THEIR at their cost should There. be recorded at their cost. THEIR. Okay, okay. That is cost of the asset and include all the expenses, incurred to put the asset to use. Okay, all the cost will be added. The cost of the asset plus all the expenses that are used to put the asset into the use. Okay, for example, if we purchase air conditioner, so in that case, the cost of the AC that we gave in the shop, the bill, and then उसको घर तक लाने के लिए फेयर लगेगा,
उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए कोई आएगा जिसको पैसा देना होगा. So all these are added up in the cost. तो अल्टीमेटली लास्ट में कोई पूछेगा कि कितने का पड़ा, तो we will add the whole cost and will tell them. So the cost is used over here. And in cost रेडी टू यूज सर लगता है वही ना सर. क्या चीज? हेलो सर, मतलब कोई भी एसेट्स लाए तो वो रेडी टू यूज तक में जो रेडी हाँ होने के वही लिए चीज जो है. पुट टू यूज कहने का मतलब हो गया टू रेडी टू यूज. वहां तक लाने पे जितना भी एक्सपेंसेस लगा वो सबको हम लोग ऐड कर देते हैं. ठीक है. एंड वी इग्नोर द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस से हम लोग को नहीं मतलब है. तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट is to be ignored. Market price of the asset is to be ignored. Now write down dual aspect concept. Dual aspect concept. Dual aspect मतलब every transaction has two aspect. One is the debit and the other one is credit. So every transaction will have two-sided effect. One must be debited and the other one will be credited. So write down. It means every transaction of the business, every transaction of the business has two aspects, and both the aspect should be recorded. Should be recorded. Clear है? Yes, sir. Write down the next point. One aspect is debit. One aspect is debit and the other aspect is credit. Write down the next point. The amount of debit and credit should be equal. Okay, debit and credit, both the amount of both the sides should be equal. And write down next point. It is the basis of double entry system. It is the basis of double entry system. Okay, it give rise to
double entry system, the concept of double entry system. Chalo, write down the next concept. Matching concept. Matching concept. Write down. It means that the expenses should be matched with the revenue generated in the period. ठीक है, मतलब इसमें हम लोग पता करते हैं, मैच करते हैं कि कितना रेवेन्यू आया और कितना एक्सपेंस लगा। इन दोनों को मैच करने का काम में हम लोग बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तभी पता चलेगा कि हम लोग को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के वजह से हम लोग पता लगा पाते हैं कि हम लोग का बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस। It helps in calculation of profit or loss of the business. Profit or loss of the business. और इस कॉन्सेप्ट को बनाते वक्त हम लोग के पास कुछ जजमेंट्स का जरूरत होता है, पर्सनल जजमेंट्स का, कि हम लोग को किस आइटम को लिखना चाहिए, किसको नहीं लिखना चाहिए। अब जैसे डाउटफुल डेट्स वैसे डेट्स होते हैं जिन पे डाउट है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब इट शुड बी रिटेन इन द बुक्स और नॉट। इफ इट इज टू बी रिटेन देन बाय व्हाट अमाउंट। तो ये सब जजमेंट हम लोग को करना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट लिख देंगे तो हम लोग का बिजनेस में लॉसेस होने का चांसेस है, कम लिख देंगे तो गलत प्रॉफिट दिखाने का चांसेस है। तो इसी के लिए हम लोग को ये पर्सनल जजमेंट करना पड़ता है इसमें। तो राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ personal judgment in making the estimates for doubtful debt. In making the estimates for doubtful debt. Write down the next concept. Revenue recognition concept. Revenue recognition concept. See, it is quite similar to matching concept, but over here it is clearly mentioned revenue recognition. That means we have to recognize the revenues, from where we can get the revenues. Okay, so write down. It provides a standard
for recognizing the revenue. For recognizing the revenue. Write down the next point. It helps in determining the amount and time of recognizing The amount and time of recognizing the revenue from business. revenue from बिजनेस, हम लोग जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे उसमें से जो रेवेन्यू आने का हम लोग के पास चांसेस है, द रेवेन्यू दैट वी कैन जनरेट, वी विल बी टेकिंग दैट. Write down the next point. Normally, revenue should be recognized when it is realized. Okay, we will recognize the revenue when it is realized. Because before that we can just only think that the money will come, the income will come, and then we will be making expenses. So when will income will come? Okay, so write down the next concept, accrual concept. ACCRUAL, accrual concept. See, this accrual concept helped us in making the estimates of like outstanding. And the concept of outstanding has been received because of accrual concept. So write down. According to this concept, all expenses and revenues are recorded. All the revenue, sir. All the revenues are recorded on the basis of their occurrence. THEIR, their occurrence. OCCURRENCE. Their occurrence. And बता रहे हैं, पहले लिख लो, कंप्लीट कर लो. And not on the basis of actual cash paid or received. See, first of all, occurrence मतलब basically dues. जब भी ड्यू होगा ना, हम लोग उसको उसी समय लिख लेंगे.
पैसा बाद में मिले या कुछ भी हो, जिस समय ड्यूज होगा उसी समय मेरे बुक ऑफ अकाउंट में उसका एंट्री होगा। ठीक है, तो जब अकर अकर करना मतलब जब ड्यूज होना। नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर एंड के बाद बोले थे सर, एंड के बाद एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल हो गया कैश सर। पेड और रिसीव्ड। ओके ठीक है, कैश कब पे हुआ कब रिसीव हुआ इससे हमको मतलब नहीं है, जब ड्यूज हुआ वहीं पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगला लिखो, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर का मतलब जितने सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है हम लोग के बिजनेस के, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी डेटा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए जो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मींस जो कि बिजनेस में हाईली अफेक्ट कर सकते हैं उसके ट्रांजैक्शंस को, प्रॉफिट को, लॉसेस को, तो हम लोग को उसको रिकॉर्ड करना क्या होता है, जरूरी। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट all the significant information related to all the significant information related to financial statement must be recorded. Financial Statement must be recorded. जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होंगे ना वो सबको लिखना जरूरी है। चाहे हम लोग सपोज करो ट्रेडिंग पीएल बनाए, बैलेंस शीट बनाए, वहां तक में भी अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसा होता है जिसको हम लोग शो नहीं कर पाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने के बाद फुटनोट में लिखेंगे, बट हम लोग उसको शो करेंगे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता है तो उसको हम लोग फुटनोट में शो करेंगे। क्या चीज? सर ये आप जो बताए कंटेंजेंट लायबिलिटी बताए सर, क्या हाँ, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। ये क्या होती है सर? बेसिकली कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वैसे लाइबिलिटीज होते हैं जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मतलब अभी हम श्योर नहीं है। जैसे सपोज करो किसी बिजनेस के खिलाफ कोर्ट केस चल रहा है, तो डिसीजन मेरे फेवर में भी आ सकता है, अगेंस्ट में भी आ सकता है। अगर सपोज करो अगेंस्ट में आया तो हमको पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई वैसा केस है जिसमें हमको पैसा पे करना है, तो अगर डिसीजन मेरे बिजनेस के अगेंस्ट में है तो बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा ना। यस सर। yes sir. तो वो लाइबिलिटी है। और कंटिंजेंट मतलब ऐसा लाइबिलिटी जो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग को मेंटेन करके रखना होगा ना। तो अब क्योंकि ये कंटिंजेंट है, कंफर्म नहीं है, तो हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते इस लाइबिलिटी को। तो हम लोग बैलेंस शीट बनाने के बाद नीचे एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, फुटनोट बोलते हैं उसको। ठीक है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग, आगे जाएंगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसको। राइट ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, right now it implies that
same accounting principles methods should be used for preparing should be used for preparing financial statement year after year. ठीक है, मतलब अगर हम लोग एक साल किसी मेथड को फॉलो किए तो हर साल फिर उसी मेथड को फॉलो करना चाहिए. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है. दो मेथड है. अब सपोज करो मेरा बिजनेस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज किया, अब अगले साल हम स्ट्रेट लाइन को यूज करेंगे तो गलत है. मतलब अगर हम लोग एक बार रिटर्न डाउन को चूज किए तो हमेशा फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही क्या करना है, हम लोग को यूज करना है. तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलो ठीक है, कोई यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है किसी को?